Bismillah Rahman Rahim. Welcome to my channel, Science of Life with Dr. Muhammad Yousaf. Today I am going to talk about the abnormalities of secretions of this adrenal cortex. Adrenal cortical hormones, over secretion or hyposecretion we are going to talk about. These abnormal, before that, as my routine, one hadith I am going to quote. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि मोमिन मुसलमान जो होता है, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, वो लान तान करने वाला नहीं होता। मोमिन की क्वालिटी ये है कि वो किसी को लान तान नहीं करता और ना फोश गो होता है और ना बदकलाम होता है। तो हम अपने गिरबान में जहाँ के देख लें कि हम अपने आप को कहते तो मोमिन है, लेकिन हमारे अखलाक की हालत क्या है। मोमिन किसी को लान तान नहीं करेगा, फोश गो नहीं होगा, बदकलाम नहीं होगा। तो अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। हम दावा मोमिन करते हैं, मोमिन होने का दावा करते हैं, हमारे अमाल अल्लाह पाक हमें समझ दे और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। So abnormalities of cortical secretions we will discuss under these headings. One is hypoadrenalism, as we discussed the endocrine abnormalities under two headings, either hyposecretion or hypersecretion. So hypoadrenalism, that is named as Addison's disease. Addison's disease. Then second important is the hyperadrenalism, oversecretion of the adrenal gland. We will discuss it. That is known as Cushing syndrome, या Cushing disease. हम देखेंगे what is the difference between Cushing disease and Cushing syndrome. Cushing syndrome, hypersecretion. And then two more abnormalities. One is the primary aldosteronism, that is also known as Conn's disease, and adrenogenital syndrome, that is when the oversecretion of the third group of the hormone, that is the androgens, oversecretion occurs, then adrenogenital syndrome may occur. So these four diseases we are going to talk about. Today we will talk about only probably hypoadrenalism, and if time allows, then we will talk about the Conn's disease as well. We will can see. So hypoadrenalism is known as Addison disease. That is, adrenal gland is not secreting the hormones. What may be the cause? Failure of adrenal gland to produce hormone. Cause of this may be primary atrophy of the adrenal cortex. Something wrong with the adrenal cortex itself. It is a primary atrophy of the adrenal cortex. It is most common. And cause of this is usually an autoimmune process, autoimmunity, which destroys the adrenal gland itself, and the body is formed against the adrenal cortex, and that is destroyed. Or sometime TB, tuberculosis of the adrenal cortex, may cause the invasion of this area with the tuberculous process, will cause the destruction of the adrenal cortex, or the cancerous destruction of the adrenal cortex. So these are the common causes: TB, cancer, and autoimmune disease. These are the three common causes of the Addison disease or hypoadrenalism. Now, when we say hypoadrenalism, we are whole of the adrenal cortex may be affected in this adrenal tuberculous destruction, or the cancerous destruction, or the primary autoimmune disease will destroy whole of the gland. Whole of the gland means all the hormones will be absent, and important hormones are the mineralocorticoids and glucocorticoids. So there are three important features of the Addison disease. One is mineralocorticoid deficiency. We have discussed the function of aldosterone. We should keep all those functions in mind, and all those functions will be absent if aldosterone is absent. So mineralocorticoid features of the mineralocorticoid deficiency we should keep in mind. And then glucocorticoid, the cortisol, the glucocorticoid, if they are deficient, we should know all the functions of the glucocorticoid, all those functions will be absent. So absence of the glucocorticoid. Third feature we will be added. What is that? We have discussed the regulation of secretion in the previous lecture. Regulation of secretion, we saw that is the ACTH production
When it increases, there is more production of melanocyte stimulating hormone as well, because that is the part of the original pre-opioid cartin. So MSH will be also increased whenever there is over secretion of ACTH. So there will be hyperpigmentation. So these three features we are going to talk about in Addison disease. So mineralocorticoid deficiency first. Mineralocorticoid aldosterone, which is responsible for the conservation of salt and water and chloride and etc. etc. You should know all the functions. So main important features I am going to list. You should know the function, and this will give you, if you know the function, this will you can prepare your own list like this. That is, mineralocorticoid deficiency will reduce the sodium level, chloride level and bicarbonate level, because they will not be absorbed. Their absorption, primarily absorption of sodium, and secondary to that absorption of chloride bicarbonate will occur. So this will be reduction in the absorption of these from the renal tubule. And water is also osmotic absorption of water was the function of aldosterone. If aldosterone is deficient, there will be less absorption of water. ये दोनों नहीं होंगे, so this will cause less increased loss of water in the urine, excessive loss of water and electrolyte. Water will be lost in the urine, electrolytes will be lost in the urine, and this will cause the reduced extracellular fluid volume, reduced blood volume, reduced cardiac output, reduced blood pressure. You can work out if you know the function. So there will be loss of water and electrolyte in the water. When water is lost from the blood, hypovolumia, blood का वॉल्यूम कम होगा, वाटर कम हुआ है ना, बाकी ब्लड को तो कुछ नहीं हुआ. Concentration of RBCs will be more. पानी निकाल लिया हमने, बाकी सारी चीजें पड़ी हुई हैं. So concentration of this RBC will be more. Polycythemia like feature भी होगा. We know the function of aldosterone. Aldosterone is responsible for secretion of potassium. जब aldosterone नहीं होगी, there will be hyperkalemia. So all these features you will have to work out if you know the function of aldosterone. Acidosis, because aldosterone causes the excretion of hydrogen ion. When aldosterone is deficient, excretion of hydrogen ion will not occur, and it will cause the increased level of hydrogen ion concentration, which is known as acidosis. And decreased extracellular fluid volume, I have talked about that. Extracellular fluid volume will be reduced, cardiac output will be reduced, blood pressure will be reduced. So I said when we were discussing the function of aldosterone, total absence of aldosterone may cause death within days, not weeks. Within days, 3 to 4 days, total absence of it. Life is not possible without aldosterone. So this will cause the shock will occur, because so it has to be corrected very quickly. So Addison disease के features different levels. कितनी aldosterone कम है, थोड़ी कम है तो feature कम होंगे, ज़्यादा कम है तो as I said, death can occur within days. So these are the features. Death may occur within a few days. So these are the features because of the deficiency of aldosterone, because of mineralocorticoid deficiency. ये एक feature है. दूसरा feature glucocorticoid भी कम है. ग्लूकोकार्टिकॉइड जब कम हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा? कार्टिसोल कम. कार्टिसोल के फंक्शन हमें पता है, वी कैन लिस्ट दोस फंक्शन. कार्टिसोल, when cortisol is deficient, there is inability to maintain blood glucose level between meals, hypoglycemia between meals. Cortisol increases the blood glucose level. When सुबह खाना खाया हमने, नाश्ता खाया, ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हाई, बट बिटवीन मील्स 12 बजे के करीब, 1 बजे के करीब जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाउ इट इज मेंटेन. हमने खाने वाला ग्लूकोज तो हमने हजम कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, बॉडी में एनर्जी इस्तेमाल कर ली, ग्लाइकोजन बन गई. अब ग्लूकोज कहां से आएगी? इट इज कार्टिसोल एंड ग्रोथ हार्मोन, उसका भी काम है, बट प्राइमरीली कार्टिसोल. कार्टिसोल विल सप्लाई द ग्लूकोज फ्रॉम द लिवर एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस फंक्शन हमने पढ़े हुए. तो व्हेन कार्टिसोल इज डेफिशिएंट इन दिस एडिशन डिजीज, दिस बिटवीन मील्स हाइपोग्लाइसीमिया, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा भूख को, उस वक्त उसको बेहोशी, फेंटिंग भी हो सकती है. So inability to maintain blood glucose level between meals, hypoglycemia between meals. Less mobilization of amino acid. Cortisol is responsible for the mobilization of amino acid. So amino acid supply to the liver for the synthesis of the protein, etc. will not be there. Amino acid as well as the fatty acid, दोनों काम करती है.
कार्टिसोल causes mobilization of the fatty acid as well as the amino acid, दोनों का लेवल कम हो जाएगा. तो व्हेन ग्लूकोज भी नहीं है, अमाइनो एसिड भी नहीं है, फैटी एसिड भी नहीं है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या होगा? ऑल दीज थ्री बेसिक न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज, तो वो नहीं होंगी, दो ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विल बी रिड्यूस. स्लगिश एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ऐसा बंदा एनर्जी के क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस होंगे, ग्लूकोज भी नहीं हो रही, नहीं मिल रही, और अमाइनो एसिड भी नहीं है, फैट्स भी नहीं है, तो energy crisis, sluggish energy metabolism will be there and the muscle will be weak. Muscle मेन तो weak इसलिए कि energy crisis है, muscles are weak and there will be deterioration of the effects of even minor stress. स्ट्रेस में जो रोल कार्टिसोल का हमने पढ़ा था, whenever there is physical or mental stress, very high level of cortisol may be produced. हमने देखा था ना, अगर किसी के एनिमल की हमने एक डायग्राम देखी थी, टांग टूट जाए या कोई और फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस हो जाए, कार्टिसोल लेवल ट्रेमेंडसली इंक्रीजेस, दैट इज रिक्वायर्ड. सो दिस पर्सन जिसमें एडिसन डिजीज है, ही कैन नॉट टॉलरेट इवन माइनर स्ट्रेसेस, so deteriorating effect of even minor stresses and the minor respiratory infection may kill. ये नहीं कि थोड़ा सा छाती खराब हुई, जुकाम मुकाम लगा, दिस इज वेरी डेंजरस. नॉर्मली तो देयर इज प्रोडक्शन ऑफ कार्टिसोल इसको कम्बैट करने के लिए, इसको रिपेयर करने के लिए, लेकिन इस पर्सन में एडिसन डिजीज वाले में इवन स्मॉल इन्फेक्शंस आर डेंजरस. सो टू फीचर्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी के फीचर्स ध्यान में रखेंगे तो वी विल नो द फीचर्स ऑफ एडिसन डिजीज. तीसरा जो है वो मेलानिन पिगमेंटेशन है, उसका काज हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन में. व्हेनेवर देयर इज कार्टिसोल डेफिशिएंसी जब भी होगी, यू कैन इमेजिन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा. मेरे बॉडी में कार्टिसोल नहीं है, what will happen to CRF, what will happen to ACTH? Negative feedback mechanisms, they will be tremendously increased. So in this Addison disease, cortisol तो नहीं है, ACTH level will be very high. और ACTH कहाँ से आ रही है? That is being produced by the corticotropes, that is being produced in the form of that long pre-pro hormone जिसको कहते हैं pro-apiomelanocartin, उसका बड़ा सा नाम है प्री-आपियोमेलेनोकार्टिन, और उसके अंदर एसीटीएच मॉलिक्यूल है. जब वो प्रोड्यूस हो रहा है तो बाकी चीजें भी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रही है. एंड स्पेशली इंपॉर्टेंट इज द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सो इन द स्किन, that melanocyte stimulating hormone, excessive amount of melanocyte stimulating hormone, because of this negative feedback stimulation of ACTH production, MSH is also increased. That will cause the deposition of melanin in the skin and in the mucous membrane and patchy distribution of hyperpigmented area. जरूरी नहीं है कि स्किन एक जैसी काली हो जाए, जैसे मेरा रंग जैसा है ये नेगरों की तरह काला हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता, पैचेस में आता है. पैची डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पिगमेंटेड एरिया अकर्स एंड डिक्रीज कार्टिसोल, इसका मैकेनिज्म लिख दिया मैंने. डिक्रीज कार्टिसोल causes more ACTH production, और उसके साथ साथ MSH is also increased, and that MSH molecule is a part of the original pre-opio melanocortin जिसका नाम दिया था आसानी के लिए प्री-प्रो हार्मोन, आप उसको कह सकते हैं. प्री-प्रो हार्मोन जब बनता है तो उसमें MSH is the part of that, और ACTH. ये बात भी है, अगर MSH ना भी हो ना तो ACTH खुद भी MSH जैसा काम कर सकती है. ACTH itself has melanocyte stimulating activity, उतनी ज्यादा तो नहीं है बट itself, जैसे हमने ADH और ऑक्सीटोसिन का देखा था, देयर इज ओवरलैपिंग फंक्शन, तो ACTH भी खुद भी MSH की तरह काम कर सकती है. सो ये तो हो गया थ्री फीचर्स ऑफ द एडिसन डिजीज. एक और काम है important बात about this Addison diseases, which we term as Addisonian crisis. Addison disease में Addisonian crisis, वो crisis क्या है? नॉर्मल आदमी, मुझे फिजिकल स्ट्रेस है या मेंटल स्ट्रेस है, मेरा नॉर्मल मैकेनिज्म इज मोर प्रोडक्शन ऑफ कार्टिसोल, नॉर्मल मैकेनिज्म. या जब मेरा फिजिकल मेंटल स्ट्रेस वैसे या ऑपरेशन करने लगे, ये दैट इज आल्सो स्ट्रेस. तो देयर इज नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ मोर प्रोडक्शन ऑफ कार्टिसोल. उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए या बर्दाश्त करने के लिए देयर इज द नेचुरल मैकेनिज्म. इस पर्सन में तो पैदा ही नहीं हो रही कार्टिसोल, ये कैसे पैदा करेगा? तो क्या लिखा हुआ है? इन एडिशन डिजीज द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ इंक्रीज कार्टिसोल एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस. ये तो उसमें हो ही नहीं सकता.
नॉर्मल नहीं पैदा हो रही तो इसमें स्ट्रेसफुल कंडीशन में कैसे पैदा हो सकती है? तो इसको क्या होगा, जब ये बंदा एडिसन डिजीज वाला अगर मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस में जाएगा, he or she will need tremendous increase in the cortisol level, और ये चीजें चाहिए, प्रोड्यूस नहीं हो सके, then all the features of Addison disease will be exaggerated, उसको ज्यादा तकलीफ होगी. So the critical need for extra glucocorticoid and associated debility, ये दोनों बातें, दैट इज एक्स्ट्रा ग्लूकोकार्टिकाइड भी चाहिए, और अगर वो नहीं मिलेगी एसोसिएटेड डिबिलिटी एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड द एडिसोनियन क्राइसिस. मिसाल के तौर पर एडिसन डिजीज हमने डायग्नोज किया हुआ है, उसको हम ट्रीटमेंट की तरफ हम आते हैं, उसको ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, मिनरलोकार्टिकाइड भी दे रहे हैं, ग्लूकोकार्टिक, हम एड्रीनल कॉर्टेक्स तो पैदा नहीं कर सकते ना, हम दवाई देंगे उसको, हम ग्लूकोकार्टिकाइड भी देंगे, मिनरलोकार्टिकाइड भी देंगे, ओरल, उसको ठीक चल रहा है. अब जब इसको ऑपरेशन करने लगे तो वो नॉर्मल डोज चलेगी? नहीं चलेगी. उसको ऑपरेशन से पहले मे बी 100 टाइम्स मोर हमने उसको उसकी डोज बढ़ा के तब ऑपरेशन करेंगे. इसलिए जब आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल में जाएंगे, आप जब हिस्ट्री लेते हैं, व्हेन यू टेक द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, आप उसकी ड्रग हिस्ट्री भी लेते हैं कि वो कहीं ऑलरेडी कार्टिसोल खा तो नहीं रहा, कि कोई स्टीराइड खा तो नहीं रहा. अगर ऑन स्टीराइड होगा तो देन ऑपरेशन करने से पहले आपको उसको बोलस डोज, आपको कार्टिसोल की डोज देनी पड़ेगी. तो क्रिटिकल नीड्स ऑफ द एक्स्ट्रा ग्लूकोकार्टिकाइड एसोसिएटेड डिबिलिटी, इसको एडिसोनियन क्राइसिस कहते हैं. अगर इसको ठीक नहीं करेंगे तो क्राइसिस में जाएगा, पेशेंट में डाई. तो दी 10 टाइम्स मोर कार्टिसोल मे बी नीडेड एट द टाइम ऑफ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस. जितना उसको नॉर्मल डोज दे रहे हैं, अगर 10 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन फॉर एग्जांपल उसको दे रहे हैं, तो उसको 100 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन देकर तब आप उसको ऑपरेट करेंगे, मे बी 100 से भी ज्यादा देनी पड़ती है एडिसोनियन क्राइसिस को रोकने के लिए. सो दिस एडिसोनियन क्राइसिस. और एक डिजीज तो ये हमने कर ली. एक और डिजीज साथ छोटी सी है, कॉन डिजीज भी दूसरा हम देख लेते हैं. कॉन डिजीज में होता यह है कि सिर्फ हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन होती है, बाकी कुछ नहीं होता, बाकी एड्रीनल कॉर्टेक्स ठीक होता है. दैट इज प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म इसको कहते हैं, कॉन डिजीज, यानी इसमें ओवर सिक्रीशन ऑफ सिर्फ एल्डोस्टेरोन. इसका काज क्या होता है? ये होता यह स्मॉल ट्यूमर इन दी जोना ग्लोमेरुलोसा से पैदा होती है ना एल्डोस्टेरोन. तो एल्डोस्टेरोन जहां से प्रोड्यूस है, देयर विल बी स्मॉल ट्यूमर इन दैट, वहां पे ट्यूमर हो जाता है. एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम दिस ट्यूमर विल अकर एंड दिस विल कॉज, तो इसका जोना ग्लोमेरुलोसा बाकी ठीक. So sometimes the aldosterone secretion from the zona fasciculata and zona reticularis, कभी कभी ये भी होता है, वहां से भी पैदा होने लग गए. So this causes the more level of aldosterone. Aldosterone का क्या फंक्शन हमें पता है, that will cause excessive absorption of water, excessive absorption of chloride. So chloride level may increase, some edema may occur, some blood pressure may rise. So सिर्फ aldosterone की ज्यादती हो जाती है. उस ज्यादती को, इसको अगर डायग्नोज कर लिया तो ट्रीटमेंट इसकी आसान है, you remove that tumor. So treatment is surgical removal of that tumor. कौन डिजीज है, बाकी और इसको कुछ नहीं है, एक ट्यूमर हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा में एल्डोस्टेरोन ज्यादा है, उसका ट्रीटमेंट आसान है, यू कैन रिमूव दिस ट्यूमर. और पार्शियल और सब टोटल एड्रेनलेक्टमी, अगर किसी बड़ा सा ट्यूमर है, अगर बाकी जोना फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस भी इन्वॉल्व हो गया तो वो एरिया काट के फेंक दो, बाकी वाला ठीक होगा. तो दी पार्शियल और सब टोटल एड्रेनलेक्टमी. सो ये दो डिजीजेज हमने, एडिसन डिजीज और ये कौन डिजीज प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म की हमने बात कर ली. तो एड्रेनलेक्टमी, कॉन डिजीज, एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मैं फीचर तो बोल चुका हूँ, एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम विल बी मोर, ब्लड वॉल्यूम विल बी मोर एंड ब्लड प्रेशर विल बी मोर, अभी मैं बोल चुका हूँ इसको. तो हाइपोकैलीमिया, यस, इसको भी ऐड करें. एडिसन डिजीज में हाइपोकैलीमिया, बिकॉज एडिसन डिजीज में तो हाइपरकैलीमिया होता है, एंड दिस इज कॉन डिजीज में हाइपोकैलीमिया होगा, एल्कोलोसिस होगी एसिडोसिस की बजाय, एंड वेरी स्लाइट इंक्रीज इन दी सोडियम कंसंट्रेशन. इसकी वजह क्या है? कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, बिकॉज अगर सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है तो वाटर भी एब्जॉर्ब हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती. ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. ओकेजनल पीरियड ऑफ मस्कुलर पैरालिसिस, वो किस वजह से? हाइपोकैलीमिया की वजह से. हाइपोकैलीमिया काजेज मसल पैरालिसिस, हमने फंक्शन में डिस्कस किया होगा. तो इसमें भी मसल पैरालिसिस के उसको
ओकेजनली उसको अटैक्स मसल पैरालिसिस आते रहेंगे। तो डिक्रीज प्लाज्मा रेनिन कंसंट्रेशन भी इसका फीचर है, वो आपको पता है। रेनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी स्टिमुलेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो इसमें रेनिन भी कम हो जाएगी। सो दिस इज दी कान डिजीज के फीचर्स हैं। तो बाकी जो डिजीजेज हैं हाइपर में, उसमें इंपॉर्टेंट हमारी कुशिंग डिजीज है। उस कुशिंग डिजीज को एड्रिनोजेनिटल सिंड्रोम को हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। और इसको उम्मीद है कि आपको समझ आई है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इफ़ यू हैव गॉट सम क्वेरीज और सम क्वेश्चन, add this into comments and share this video with the other students so that most of the people can benefit from it. Thank you very much.